सर ACCA और CA में फर्क क्या है? What is the main difference? क्या CA ACCA का हिस्सा है? क्योंकि आखिरी दो लेटर्स तो ACCA के CA होते हैं. Both ACCA and CA are called professional accountancy qualifications. तो सर ACCA and CA में typically क्या टाइम लगता है? But saying कि नहीं भाई accountants जो है ना अब पुराने हो गए. सर ये मेरी सैलरी कितनी होगी जब मैं ग्रेजुएट कर जाऊंगा? So a qualified chartered accountant in a professional firm, I think by the time आज की तारीख में वो 2.25 लाख रुपए की सैलरी से स्टार्ट करता है. स्टार्टिंग चैट जीपीटी और ये LLM मॉडल्स और ये जो लार्ज AI बिग डेटा है कि लेट्स से कि मैंने CA कर लिया पाकिस्तान से और उसके बाद मैंने अपनी पूरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर दी और अब मैं शिफ्ट हो गया लेट्स से यूरोप में किसी जगह. वो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं CA के राउट से जाऊँ ACCA के राउट से जाऊँ. व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए थोड़ा सा एडवांटेज आपको ACCA क्वालिफिकेशन का ये है. Assalamu alaikum everyone. My name is Qazi and today I am with a man who needs no introduction. And if I do give his proper introduction, I think it will warrant another podcast altogether. But I'll still try. He was the youngest president of ICAP, the youngest head of finance and supply chain at Karachi Electric. He is a former CFO of PIA. He was a former board of director at IFAC, and he's currently serving as the board of director at Alfala with audit and compliance. He's also at the board of directors of Dow, and he is the chairperson of ICAP and IBA's research unit. So this is Sir Khalilullah Shaikh. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Thank you so much for a wonderful introduction. I'm humbled. Just a little correction. I'm currently at the board of IFAC. Oh, yeah, Jim. Well, there you go. I told you we need another podcast for all of this. So, sir, I think let's just dive in because I think we had another podcast and they have covered, I think Sir Asad and Sir Sajid has covered a few very important points that the students are talking about. So I'd like to maybe take it further along ताकि और सवाल भी हमें भी क्लासरूम में मिलते रहते हैं. आपको तो ऐसी बात है. तो let's try to एक बड़ा important point है सर आजकल that almost a lot of students talk to me about it. सर ACCA और CA में फर्क क्या है? What is the main difference? क्या CA ACCA का हिस्सा है? क्योंकि आखिरी दो लेटर्स तो ACCA के CA होते हैं. तो मैंने बोला कि I think who better to answer this than Sir Khalil himself. थोड़ा सा इस पे लाइट डालें. हाँ. Both ACCA and CA are called professional accountancy qualifications. So the difference is that CA Pakistan is जो कि Institute of Chartered Accountants of Pakistan offer करता है is the Pakistani qualification, Pakistani professional accountancy qualification. ACCA is UK based, but they are both globally recognized. है ये कि accountancy profession, unlike many other professions, is a lot globally connected through an umbrella organization which we call the UNO of accountants, the International Federation of Accountants, जिसका मैं खुद अभी बोर्ड का मेंबर हूँ. So ICAP, IFAC, अपना ACCA, ICW, Canadian CPA, American CPA, they are all members of that. So they are all professional qualifications. CA Pakistan is Pakistan's professional qualification, ACCA is UK's qualification. अब फर्क ये है कि जो पाकिस्तान में अगर आपने ऑडिट की प्रैक्टिस करनी है तो ऑडिटिंग is a licensed profession. So you have to have a CA Pakistan qualification. CA Pakistan. लेकिन अगर आपने इंडस्ट्री में जॉब करनी है और आपने नॉन ऑडिट एरिया में कोई प्रैक्टिस करनी है then okay, you can be an ACCA and you can perform that work. Similarly, our Pakistani chartered accountants who go to UK, I mean, they work at senior position in industry. Like, for example, one of our members is the CFO of Arab Bank in UK. Wow. Europe Arab Bank, something like that in UK. So, and there are a lot of our members who are working in Barclays and other banks, UBS and many other organizations at senior positions. They are Pakistani chartered accountants only. They are not members of ACCA or ICW. But if they want to practice there, so they have to be member of that, the institute of the local body there. So assurance practice के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप local body आपको license करती है और फिर एक licensing program के तहत आप operate होते हैं. The papers, right? जो उनके papers भी देने होते हैं, फिर एक license obtain भी करना होता है, practicing license. So you have to serve for a little bit to get that. Yeah, license. So you have to have an assurance experience. You have to meet certain criteria to get that license. Yeah. Perfect. I think this explains a lot of
main problems that students have differentiating between the two programs. तो basically थोड़ा सा मैं उसका एक और second tier question पूछना चाहूँगा कि let's say कि मैंने CA कर लिया पाकिस्तान से और उसके बाद मैंने अपनी पूरी qualification complete कर दी और अब मैं shift हो गया let's say यूरोप में किसी जगह पे, तो उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं CA के राउट से जाऊँ या ACCA के राउट से जाऊँ, तो what do you suggest sir? देखिए थोड़ा सा एडवांटेज आपको ACCA क्वालिफिकेशन का ये है कि ACCA क्वालिफिकेशन की जो पेपर्स हैं और उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत सारी कंट्रीज में ऑफर होती हैं. सो ACCA इज मोर ऑफ अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन rather than just a UK based qualification. So their examinations are held in probably 100 plus countries, their training organizations are in 100 plus countries. So if you are planning to move abroad and you are very certain about it, so this qualification gives you this flexibility that even during the qualification, for example, if you are moving abroad, so you will have an option. जो हमारी typical destinations हैं immigration की, उन सारी जगहों पे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, ACCA के examinations भी होते हैं, ACCA की training organizations भी हैं, तो it's relatively easier. You get more flexibility. लेकिन अगर आपको क्वालिफाई करने के बाद जाना है तो फिर CA पाकिस्तान is equally good because it's also recognized there. The disadvantage is that the limitation is that कि CA पाकिस्तान के हमारे जो पेपर्स हैं, हमारी जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान में, एक आध मिडल ईस्ट कंट्रीज में हमारे पेपर्स होते हैं, बट जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आपको ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन इफ यू मूव आउट देयर, so you would find it difficult and you will have to probably come back, you will have to re-register for your training and all, so we don't have training organizations there, but once you qualify and you go there, you are equally recognized there. So basically if you want global mobility, ये आजकल बड़ा common phrase चल रहा है, which essentially means कि आप दुनिया में कितनी जगहों पे access है आपका with a particular qualification, it is relatively better to go towards the ACCA route rather than the CA route. या अगर आपको ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन टाइम भी थोड़ा कम लगेगा, और दूसरा ये है कि अगर ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन 5 साल का लेट से पीरियड है, जो भी एक पीरियड लगता है जिसमें यू कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन, इफ ड्यूरिंग दैट पीरियड यू वांट टू मूव अब्रॉड एंड यू हैव प्लान्स और यू आर नॉट सर्टेन अबाउट इट, देन ACCA इज प्रेफरेबल. ठीक है सर, तो जाहिर सी बात है उसके बाद फिर बच्चे सोचते हैं कि ऑलराइट लेट मी वंस दे हैव मेड दैट चॉइस ACCA के राउट पे जाना है या CA के राउट पे जाना है, तो एक और जो क्वेश्चन उनके पास आता है कि भाई टाइम कितना लगेगा, बिकॉज एक टिपिकल होता है कि मैं अपनी बैचलर्स डिग्री में 4 साल होता है जनरली, MBBS के लिए 5 साल होता है, BE के लिए इतना होता है, तो सर ACCA and CA में टिपिकली क्या टाइम लगता है? अच्छा, पहली चीज तो ये भी एक मिसपरसेप्शन है, जनरली दे कंपेयर इट विद डिग्री क्वालिफिकेशन, वी आर एक्चुअली अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन. तो CA जैसे फॉर एग्जांपल है, तो आप IBA से लेट से आप ACF प्रोग्राम से आपने बैचलर्स किया, then you can get into the CA final and training. So you get it's actually a postgraduate qualification, ACCA या जो CA है, and it's equivalent to masters. अब CA में ये है कि इसके 2 routes हैं, one is through the degree program which is a very longer route, and the other is the normal program after the intermediate and A levels. So अगर आप intermediate या A levels के बाद CA पाकिस्तान की qualification pursue करते हैं तो 2 साल का आपका CAF या प्री आर्टिकलशिप की फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम है, देन यू गेट इनटू आर्टिकलशिप व्हिच इज 3.5 years, तकरीबन 5.5 साल की जर्नी है ये अगर आप फॉर CA. ठीक है, और अगर आप CA की मैं बात कर लेता हूँ, अगर आप डिग्री प्रोग्राम के थ्रू राउट होते हैं, लेट से आपने 4 साल का बैचलर्स किया, फिर आपको 3 साल की आर्टिकलशिप है, तो इट्स अ 7 years जर्नी, तकरीबन 1.5-2 साल आपके बच जाते हैं इफ यू गेट डायरेक्टली इनटू द प्रोग्राम आफ्टर A levels और इंटरमीडिएट. अच्छा, ACCA में ये है कि 2 साल के पेपर्स हैं और 3 साल की आपकी जो है वो ट्रेनिंग है. अच्छा, कुछ लोग वो ट्रेनिंग अपने लास्ट फाइनल पेपर्स के दौरान भी शुरू कर देते हैं, टाइम बचा लेते हैं, तो मैक्सिमम इट इज 5 years, जनरली टेक्स 4.5 to 5 years. तो आपको 6 महीने साल का फर्क है बिटवीन ACCA एंड CA आफ्टर A levels. तो अक्सर ना बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं, सर ये आर्टिकलशिप में क्या आर्टिकल लिखने होते हैं, क्या करना है, क्या होता है, राइट? तो पहले तो इतना तो सबको ही अंदाजा है मेरे ख्याल से, आर्टिकल्स नहीं लिखने होते, इट्स कॉल्ड आर्टिकलशिप फॉर अ रीजन. एंड आपने सर CA में आपने वर्ड यूज किया आर्टिकलशिप, ACCA में आपने ट्रेनिंग यूज किया, क्या ये दोनों अलग होते हैं, क्या सेम होते हैं, तो सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, थोड़ा उस पर एलैबोरेट करेंगे? हाँ,
So articleship ACCA में भी कहते हैं articleship or training are interchangeable words that we use, you know. They're like extended internship, you can say. Okay. You know, so articleship is like extended training, which is like 3 years or 3.5 years का ये period होता है. ACCA में थोड़ी flexibility है इसमें काफी. Alright. अच्छा, which if you ask me from a professional perspective is not very helpful at times. फ्लेक्सिबिलिटी यूं हो जाती है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आप एक सर्टेन स्किल सेट्स अपने वो कर रहे हैं तो वो भी एक ट्रेनिंग में काउंट हो जाता है. और आपके पास लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स. some organizations they have got established training programs, so they offer very good training. Some do not have that established program, so you have to be a bit careful. ACCA gives you that choice, so it keeps the lever with you. Flexibility दे दिया उन्होंने आपको, you know. On the other hand, जो CA पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग है वो they are very stringent in terms of qualifying an organization for a training program. So even in industry, not every organization can offer you training. So they have got criteria. They should have 5 chartered accountants in that organization. Should have multiple departments so that you get rotation. Qualifications है only then. तो अच्छा, आर्टिकलशिप भी दोनों तो होती है. ऑडिट फर्म्स या जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स हैं वहाँ भी होती है और इंडस्ट्री में भी होती है. ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनिलीवर, शेल, हबीब बैंक, के इलेक्ट्रिक, PIA, दे आल्सो ऑफर ट्रेनिंग फॉर बोथ CA and ACCA. तो दोनों में ये ट्रेनिंग होती है. अच्छा, ट्रेनिंग अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म में चले जाएं तो उसमें जिस डिपार्टमेंट में आप चले जाते हैं, सो यू सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स जनरली. So for example, if you are in assurance, which is the audit, so you get a chance to audit large organizations, small organizations, depending on आप किस firm में जाते हैं, उनके क्या clientele हैं. But you keep rotating, they keep rotating you to different clients. Industry में जब आप आते हैं, organizations like Unilever या Shell, वो आपको rotate करते हैं within the organization, giving you flavor of, let's say, treasury function, internal audit, business finance. यूज करते हैं लोग words, वो यही है. मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज जनरली फॉर MBAs. ये थोड़ा एक्सटेंडेड है और इसमें दे रोटेट यू टू वेरी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. MTO प्रोग्राम में भी रोटेशन होती है, जनरली वो साल का होता है, तो वो ये थोड़ा एक्सटेंडेड होता है. सो यू गेट मोर ट्रेन, यू गेट मोर एक्सपोजर, दे गिव यू मोर हैंड्स ऑन रिस्पांसिबिलिटीज. आई थिंक दैट इज वेरी वेल अंडरस्टूड. तो एक और भी लोगों का सवाल होता है कि क्योंकि आपने बताया कि CA के लिए जो आर्टिकलशिप है उसमें तो बड़ी एक क्वालिफाइड फर्म्स एंड companies and only those can give you the necessary articleship for the qualification of CA. ACCA में आपने बोला flexibility ज़्यादा है in terms of ACCA ने as an organized flexibility दी हुई है. तो हम recommend students को ये करते हैं that you choose good organization for yourself, ताकि आपका experience भी वैसा ही हो और skill set भी आपको मिले. आप अच्छे qualified organization लोगों के under training हासिल करें, established organizations में जाएं जिनके पास established training programs मौजूद हैं already. बिल्कुल. तो उसमें एक और कुछ बच्चे हैं, there are certain kids जिनके माशाल्लाह से family business already चल रहे हैं. वालिदैन उनके माशाल्लाह से बहुत अच्छी सेटअप्स लगाए हुए. And most of them, when you talk to them, they're like, all right sir, we're going to finish our A levels and we're going to do our ACCA or CA or degree or whatever. So if I just join my father in running my dad's organization or my family's organization, would that count for ACCA's articleship? Because clearly what you said, वो CA में तो मुश्किल है chances कि वहाँ पे वो qualify हो. तो क्या ACCA के अंदर अगर आप सेल्फ बिजनेस अपना बिजनेस करें वो भी क्या उनकी ट्रेनिंग में मतलब ऐड होगा या फिर नहीं होगा? जी, ACCA में ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है. अच्छा, वो सर्टेन स्किल सेट्स डिफाइन उन्होंने की हुई हैं कि यू हैव टू इंश्योर दैट यू गेट दीज स्किल सेट्स इन योर ट्रेनिंग, यू नो, these kind of experiences. You know, so you meet those criteria. But my recommendation to those students is, yes, you have that flexibility. You use it for, let's say, half of your training period. And for the rest of the half, you get into a good organization, get yourself trained there, and then you can complete the remaining of your experience in your family business. And you know, so it could be a mix of both. So rather than you complete the entire 3 years in an organization, you want to support your father or your family business, you can do so. But to get an experience of an established organization, it really helps. Half and half कर लें. Half and half कर लें, 1 साल कर लें. बिल्कुल. Last वाला half जो है वो आप अपने फैमिली वाले के साथ कर लें. शुरू में आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं. That could be a good compromise, I would say.
तो एक और भी आजकल जाहिर सी बात है, कुछ लोग अपनी फैमिली बिजनेस में लग जाते हैं या फिर अपने कारोबार स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक बहुत जनरल जो बहुत ही कॉमन सवाल है वो है, सर ये मेरी सैलरी कितनी होगी जब मैं ग्रेजुएट कर जाऊंगा। अब ये बड़ा मुश्किल होता है आंसर करना, because there are so many other variables, but I think since you are in the industry for I don't know how long now, आप थोड़ा इस पे लाइट शेड करें। ड्यूरिंग तो आर्टिकलशिप या ट्रेडिंग आपको स्टाइपेंड मिलती है, एंड दैट स्टाइपेंड इंडस्ट्री में थोड़ी ज़्यादा है, प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर्म में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, वो कम है, वो प्रिस्क्राइब्ड बैंड्स है। जितने पेपर्स आप पास करते जाते हैं वो स्टाइपेंड बढ़ती जाती है, इट रीचेस अप टू 50-60,000। बट वंस यू क्वालिफाई, so a qualified chartered accountant in a professional firm, I think by the time आज की तारीख में वो 2.5-2 लाख रुपए की सैलरी से स्टार्ट करता है। Starting and it becomes even, it is getting difficult. I mean, a couple of friends in the professional services firm who are the HR partners, they have been sharing their concern that they are finding it difficult to retain talent even at that salary level, because there is a huge demand of professional accountants abroad. अभी US में 3 लाख से ज़्यादा jobs की जो है ना मौजूद है, and not just the big four but even people from GT, BDO, I mean these are the top 10 firms में जो आती हैं, वहाँ से भी यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। I mean I've seen a lot of people going to New York, New Jersey, to Luxembourg, to Caribbean, to even main cities like London, Dublin, you know, yeah. So retaining talent here is becoming a challenge for the professional services firms and even for the industrial organizations as well. That's a testament to the fact that how important these qualifications are nowadays. And वही supply and demand में इतना gap है कि demand ज़्यादा है, supply कम है, तो that should just steer the student towards these qualifications. मैं आपको बताऊँ, मैं before joining the board of IFAC, I remained on the very prestigious committee of IFAC, which is Professional Accountants and Business Committee, for 6 years. The professional accountants in business are people like me, जो कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करते हैं, जैसे PIA, इलेक्ट्रिक, यूनिलीवर, यू नो, एंड दूसरे अकाउंटेंट्स वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, जो प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स, ऑडिट फर्म्स से काम करते हैं। तो जो PIB की ग्लोबल कमेटी, यानी यू नो दुनिया के सारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन बिजनेस को हम रिप्रेजेंट करते थे वहाँ। तो हमने एक बार जो ना एक कैलकुलेशन की कि हम IFAC में IFAC represents 3 million professional accountants of 180 accounting bodies in more than 135 countries. तो हमने कहा कि how many accountants the world needs depend given जो businesses हैं, और अब जो complexity of the businesses is increasing, given that every mom and pop shop has become a global business by virtue of the social media and technology and the payment platforms and all. You know, Amazons of the world, they're trading their products globally. So we came at a figure of about 10 million professional accountants. The world needs 10 million professional accountants. Given the businesses that we have around the globe, given the increasing complexity and the skill sets, and the fact that the businesses need the services of professional accountants, that the way their role is changing to become co-pilots of along with CEO for organizations, their strategic role की जो importance बढ़ रही है, वो सब देखते हुए, यानी this is the ballpark figure we came up with. और अभी मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, आपने बोला अभी तकरीबन 3 मिलियन है। 3 मिलियन है, तो 3 मिलियन और 10 मिलियन मतलब 7 मिलियन का डिफरेंस है। अब मैं आपको बताऊँ ना, हमारे मुल्क में तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें, so in a country like Singapore, as if I'm not wrong, is about 30,000 plus professional accountants, 25 to 30,000 ये एक फिगर कुछ साल पहले थी, अभी मैंने लेटेस्ट फिगर्स चेक नहीं की, बट far more than इससे ज़्यादा ही होंगे, far more than we have active पाकिस्तानी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हम 10,000 टोटल 12,000 हैं, कुछ नंबर नहीं है, 250 मिलियन आबादी, and see what small सिंगापुर की आबादी आप देखें, you know, so this is the country, and globally and locally we need a lot of professional accountants. Definitely. मैं भी सोच रहा हूँ सर। अच्छा, तो एक और बड़ा सवाल है आजकल, क्योंकि ये हर बच्चा चैट GPT और ये LLM मॉडल्स और ये जो लार्ज AI, बिग डेटा, ऐसी बातें कर रहे होते हैं। आधों को तो पता नहीं होता वैसे क्या चीज़ होती है, लेकिन they're always talking about it. Definitely, it's the new thing in town. We should definitely talk about it. I think it is changing the world for sure.
So how does that impact accountants? Some people are saying कि नहीं भाई accountants जो है ना अब पुराने हो, अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब मेरे पास एक चैट बॉट आएगा, वो मेरी सारी अकाउंटिंग कर देगा, why do I need a person? तो इसके बारे में क्या ख्याल है सर आपका? असल में ये काफ़ी मिसपरसेप्शन है और ये यहाँ नहीं है, बल्कि मुझे याद है एक साफा की स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हो रही थी. साफा इज साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स. इसमें जो कि साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनकी अकाउंटिंग बॉडीज, नेपाल, बांग्लादेश, दे आर मालदीव्स, ये सब इनकी. तो उसमें एक स्टूडेंट, श्रीलंकन स्टूडेंट ने मुझसे ये सवाल भी पूछा, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, एंड आई विल रिपीट द सेम आंसर दैट आई गिव. मैं समझता हूँ कि ये जितने AI अपना ये जो IT के टूल्स है ना, they are going to supplement, they are going to complement the human intelligence and our role actually. The world will see, inshallah, far more empowered and enriched CFOs and finance managers and professional accountants than we were, because the kind of the processing tools that would be available at their disposal would help them become far more effective CFOs and far more effective business and finance managers. अब आप देखें ना, स्किल सेट्स चेंज होंगी. इन टूल्स को यूज तो हम ही लोग करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर नेविगेटिंग द बिजनेसेस इनटू अ chaotic environment. ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे, ऐसे हेल्प करेंगे. अच्छा, उसके लिए कुछ स्किल सेट्स रिडंडेंट जरूर हो जाएंगी, कुछ स्किल सेट खत्म होंगी, कुछ नई स्किल सेट्स आ जाएंगी, वो सीखनी पड़ेंगी आपको. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अक्सर मजाक में शेयर करता हूँ कि जब हमने फर्म ज्वाइन की थी ना, तो हमें हमारे सीनियर कहते थे कि दे यूज्ड टू बी पीपल, हम मजाक करते थे, जो कि बैलेंस शीट टाई करने के एक्सपर्ट्स कहलाते थे उस जमाने में. तो हम कहते थे कि यार व्हाट अ जोक इट इज. आई मीन, जब हम जमाने में आए तो ERPs आ गए थे, तो बैलेंस शीट तो टाई होती है ERP में, ये टाई करने वाले एक्सपर्ट्स कौन? बिकॉज उस वक्त तो बुक्स पे लेजर बनते थे, उसमें गलतियां होती थी, तो बैलेंस शीट टाई करने के फिर वो स्पेशल एक्सपर्ट्स होते थे, वो एक स्किल सेट होती थी, यू कैन से. सर मैं आपकी इस बात पे ऐड करूं, A लेवल में हमारा पेपर हुआ अकाउंटिंग का A2 का, तो 2007 की बात है, हम निकले बाहर, तो हमारे जो 7-8 अकाउंटिंग बॉयज थे, जिन्हें हम बोलते थे कि यार आपस में थोड़ी लगी होती थी ना कि आपकी टाई हुई, आपकी टाई नहीं, बैलेंस शीट टाई हुई नहीं, उसमें सिर्फ एक की हुई और उसका भी आया, बाकी सबका A आ गया. सो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप. अब वो स्किल सेट आज आप कहेंगे रिडंडेंट हो गई ना. अच्छा, पोस्ट ERP फिर आगे एनालिटिक टूल्स, डैशबोर्डिंग टूल्स. व्हेन आई वाज द हेड ऑफ सप्लाई चेन एट KEI, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ ये, मैंने डैशबोर्ड बनवाया. हमारे पास 2000 प्लस व्हीकल्स होती थी. वन ऑफ माय जॉब वाज टू इंश्योर दैट द बिजनेस हैज गॉट द व्हीकल्स अवेलेबल, जिन्हें हम MTLs कहते हैं, और अदर व्हीकल्स, so that उनकी availability 95 से 100 के दरमियान 98-99% हो, so that they can address to the customers service requirements and customer complaints. रिजॉल्व कर सकेंगे. तो we were support. अब हमने एक डैशबोर्ड बनवाया, उस डैशबोर्ड की बेसिस पे I could drill down to the last, vendor wise, vehicle wise, region wise, area wise, कि कौन सी vehicle कब कितनी बार unavailable रही है, किस वजह से रही है, is it a battery issue, is it a fly issue. तो ऑन 1 घंटे के एनालिसिस से 2 घंटे के एनालिसिस से ना, मैं पूरी वीक की सारी प्रोग्रेस मॉनिटर कर लेता था, मैं हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लेता था, वेंडर इश्यूज, व्हीकल इश्यूज आइडेंटिफाई. दिस टूल एक्चुअली इनेबल्ड मी, और उसकी बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कर सकता था कि डू आई नीड टू हैव अनदर वेंडर, डू आई नीड टू चेंज फ्यू व्हीकल्स, डू आई नीड टू डू दिस. वो सारा जो है ना, AI ने क्या किया बेसिकली, सॉरी डैशबोर्डिंग टूल ने क्या किया, इट एक्चुअली हेल्प्ड मी, empowered me to take decision on a timely basis, and it helped us increase our availability. उस वक्त जो 90s में थी, somewhere around 90 something से हम 98-99% तक पहुंचा गए. So we achieved our target. It helped us do that very effectively in a very short span of time. अब ये जो टूल्स आएंगे AI, ये शायद प्रॉब्ली आपको इससे भी ज़्यादा एम्पावर करेंगे. वो शायद 2-3 घंटे से भी आपका टाइम सेव हो जाएगा. यू कैन यूज दैट इन मोर प्रोडक्टिव वर्क्स एंड डिसीजंस. प्रेडिक्टिव हो जाएंगे. अब आपको नई स्किल सेट क्या चाहिए होंगे? अब आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी AI के लिए. हमें क्लिक, डैशबोर्ड, पावर BI ये सीखना पड़ा. जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे ऑपरेट करते हैं ये समझना पड़ेगा. सो some skill sets would become redundant, probably spreadsheet would become redundant, and these skill sets would become important, but the role of accountants would probably become far even effective, far better. You can predict
empowered roles हो जाएंगे, ज़्यादा enriched हो जाएंगे, and you will be probably more effective business and finance. बिल्कुल, आपने एक पॉइंट सा नोट बोला अभी, वो बिल्कुल मुझे क्लिक किया that जाहिर सी बात है जब आपके पास ये सिस्टम्स हैं, लाइक अब तो इंशाल्लाह जब AI आ रहा है तो वो जितना आपके लिए काम आपका करके दे रहा है उतना ही टाइम आपके पास फ्री हो रहा है to do bigger things. Yes. So we should always look at it like this. Absolutely. जैसे आपने बोला कि वो आपने डैशबोर्ड बनाया तो now you could just see all the data and analyze and get to the problem quicker, far quicker. Yeah. So that is completely right. So this is, I completely agree कि ये misconception है कि टेक्नोलॉजी तो हमें obsolete कर देगा. भाई आप उसकी कर्व के साथ आगे बढ़ जाओगे. बल्कि मैं आपको बताऊं मजेदार, budgeting हम करते हैं, the actual world is complex. You really want to see through what's going to happen. Business models are being shattered. Predictive analysis becomes so important. हम IFAC पे थे, हमने एक कंपनी के CFO को बुलाया, उन्होंने हमें बताया वो IBM का टूल यूज करते थे, क्लाउड कंप्यूटिंग, and he said using this we have now mastered, the tool has helped us. अब हमारी जो बजटिंग फोरकास्टिंग है वो 95% एक्यूरेसी के साथ हम करते हैं, which used to be around 60-70% for that specific one organization I'm saying. So these tools are going to really help you. अब क्या है, उस टूल को ऑपरेट करने के लिए you have to learn certain skill sets. But they empower you to see into the future in a more accurate way, to plan ahead things in a more effective fashion, I would say. Maybe definitely even designers के बारे में एक बड़ा कहा जा रहा था कि अब obsolete हो गए, लेकिन जाहिर सी बात है जो डिजाइनर यूज कर रहे हैं AI टूल वो भी उसको यूज करते हुए अपने डिजाइन को बेहतर कर लेता है. तो that is true. तो सर हमने I think बहुत सारे important points को तो डिस्कस कर लिया. एक और बड़ा कॉमन पॉइंट है, बल्कि जो मेरा भी एक सवाल है सर आपसे, वो ये है कि ACCA and CA हमने डिफरेंस पता कर लिया, कौन सी जगहें करवाती हैं and how is Converge different than them? जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे CA पाकिस्तान को ले लेते हैं as an example. One route is after inter and A levels, the other is through the degree program. Now, जो normal route है after inter and A levels, in that route the focus of the institution, they are institutions who are accredited, they provide the you can say the tuition for the subjects, and the exams are conducted by these bodies. So their focus is more on the technical skill set. जब आप इंटर और A levels के रूट से जाते हैं तो जनरली यू आर फोकस्ड ऑन पासिंग द एग्जामिनेशन, बिकॉज इट्स अ टेक्निकल स्किल सेट दैट यू नीड टू पास एन एग्जामिनेशन, और वो सारा फोकस उस टेक्निकल साइड पे होता है. सो यू मिस आउट अ लॉट ऑन बल्कि यू मिस आउट ऑन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि यूनिवर्सिटी लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है. And because that not only teaches you a number of things, it develops a lot of skills like your social skills, like your soft skills, your interpersonal, your presentation skills, your public speaking skills, networking, social side. अच्छा, degree program के through you acquire those skills, but the route is quite long. So you have to invest 7 and a half years, and उसकी वजह से होता क्या है कि a lot of people who initially think of कि वो degree program के through जाते हैं, and then over a period of time they find it, I mean it's too exhaustive for them कि जी अब फिर मज़ीद 3 साल की हम articleship करेंगे and all. So Converge is actually is an idea, the paradigm shift there, that within a short period of time we are going to cover both sides. I mean we are going to जिसमें हम focus करेंगे not just the technical side of the qualification, but we are also going to along with that हम university life का भी एक amazing experience देंगे, which would include development of all those skill sets that we talked about through different ways, through assignments, through social activities, through hands-on experiential learning experiences, through management जो trainings हैं, soft skills trainings हैं, leadership retreat है. You'll get the best of both worlds. Yes, get the best of both worlds through that, and that's where we say that Converge is a place where ये दोनों skill sets converge हो रहे हैं. There you go. I think इतनी ज़्यादा philosophy and name होता नहीं है common, but I'm really glad that we did it. So थोड़ा सा उस पे elaborate करते हैं. You said social skills, networking skills, presentation skills. As a professional and somebody who served at board levels and chairperson of many big organization and institutions, how important are those? कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हम तो auditor हैं,
तो हमारा काम तो बस बुक कीपिंग, किताबें देखते हैं, हमें क्या ज़रूरत है, for which I say, no, man, in life these are very important skills. In fact, as you grow, climb the ladder, ये और important होती रहती है. So आपका क्या take है सर इस पे? I think you hit the nail when you said that as you grow up the ladder, the importance of these skill sets, I mean, you can never overemphasize it. Your qualification is your passport, is your entry, right? But जो आपकी career growth है ना, वो इन skills पे ज़्यादा depend करती है. Because the more you grow, the more your job is about managing your team, is about managing your peers, managing your stakeholders, managing your board, internal and external stakeholders, and all that requires that social skills, that presentation, communication skills, your ability to build and maintain those relationships, your ability to resolve conflicts, your ability to negotiate, your ability to persuade people, your ability, to convince your seniors in the boardroom, So all these skills become extremely important as you move up the ladder. Get your point across. And have convinced not just your team, but you have to take your peers along as well. You have to work with your external stakeholders as well. So, managing the conflicting expectations, requirements of diverse stakeholders, that becomes an important job of a business and finance manager. So, these skill sets बहुत important हो जाती हैं as you grow. And for your growth, because देखिए ना, CFOs एक organization में X salary भी draw करता है और एक CFO एक organization में X multiply by 10 salary भी draw करता है. So the difference between the two CFOs is actually, this kind of leadership skills. So we call them the leadership skill set. How do you lead? How do you make people work for you? How do you motivate people? How do you groom and train people? That's also important. So all this is covered in the social skill set or the life skills that I generally call. So I think you took all of your experience, and not just for Sir Sajid and everybody, and you took your professional experience and how you work in so many organizations, and you took what is needed at this level, for a professional, how to behave, and you ingrained that into our program at Converge, right? So the stuff that we're doing here is not just that मुझे रात को ख्वाब आया और मैंने सुबह कर दिया. It comes with a lot of rationale, a lot of research, a lot of personal experience that you thought that, alright, ये चीजें ज़रूरी हैं in addition to just qualifying the paper, and we have adopted it, right? Yes. So उसमें I know that we are doing a lot of tech-friendly stuff like AI का भी components हैं, in addition to, of course, the main papers जो देंगे ACCA में. उसमें I believe sports is a very important part of it, because healthy mind resides in a healthy body. Definitely. So sports is an integral part of every module. So you've got 4 modules for both CA and ACCA, 2 years program, you sign up for 2 years, and then sports is mandatory in all those modules. Along with the sports, some module you've got these tech courses, you have got some, in some you have got internship programs, in some you have got leadership retreat, in some you have got personal development program, so different programs in different modules. And ultimately we groom you, so that you become a sort of the person with the skill set that is most sought after. That's the real skill set that the industry, the organizations are demanding right now. And not just right now, but keeping in view the future. It's basically a future fit and a future ready program actually. And I think the last part that I also have in my mind is the fact that once a student goes through the program Converge is offering, whether it's ACCA or CA, either or, eventually when they've completed the papers, gone through the extracurricular program and the tech program and the leadership program and everything that we're offering, at the end, how does their job placement and future looks like? So what we will be doing is that every individual is different. Every individual has got different aspirations, and what we will be actually trying to help the individuals who will be, or the students who will be pursuing this program, to explore themselves. And we'll actually carve out the path for them. There will also be a mentorship program. There will be a mentor assigned to every student to help him or her in carving out the right path, because that's also important. You want to pursue your training in a professional services firm because you want to go into that side. You want to go into industry, in industry, which type of organization,
So there's so many paths, and choosing the right path for you is also important. I mean, we actually help you identify what's the best thing for you. We don't dictate. Yeah. We will mentor you. We will help you take the right decision for you. और मैं आपको बताऊं, अपना अली ये इतना important है हमारे सोसाइटी में. We don't have a mentorship culture. और मैं जब इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट रहा, by virtue of that, I used to interact with a lot of senior people, and I at times used to come across such examples which used to shake me. कि a senior who's coming, who's in late 50s and saying, "Oh, I wish I would not have taken that decision. Someone would have guided me." Imagine the regret at that part of your life. At 50. At 50, So I mean, that's where the mentorship program, health and mentorship, is an extremely important element of our program here. Perfect. So I think we're going to conclude this podcast. You've heard it from the best. I mean, like I learned so much stuff today. I'm pretty sure you guys have learned a lot of things. We are still open to more questions. If you guys feel like there are certain things that we missed upon or we did not touch upon, you are more than welcome to contact our team and ask those questions. And inshallah, we will try our level best to give you the answers. And thank you so much, Sir Khalil. My thank pleasure. you so much. And by the way, Sir Khalil is going to be the Dean of Converge, which is a privilege and an honor for me, and I'm pretty sure for everybody, to be working with such a personality. And I hope to see you at Converge. By the way, the admissions link and the process will be given on our website and our social media platforms. Thank you so much. Thank you.